You know, the hallmark of a smart person is a mathematical mind. Your brain needs to be mathematically sharp. You really need to be good at basic calculation. I haven't asked you to solve calculus. Did I ask you to solve calculus? Did I ask you to solve coordinate geometry, advanced algebra? I just want you to, be good at basic calculation. For solving questions of profit and loss, for solving questions of ratio and proportion, you should not be using a pen. If I ask you to multiply 23 by 19, then you should not need a pen. Please understand, this again is essential for your smartness. There are 4-5 things. Once again, I'm going to tell you, ingredients of smartness. The first is, of course, communication. And communication, language is just a component of communication. Communication is a very vast thing. You may be very good at language, still you may not be, still you might struggle to speak in public because you don't know what to speak. You don't know how to maintain eye contact. You have this stage fright, right? So communication is very vast. Language is just one of the components of communication. Second is awareness. And third is, a sharp brain with presence of mind. You should be not only physically, mentally alert. You should have good IQ to understand what is being asked to you. You should be able to understand the question. You should be able to understand the situation. And for this sharpness of brain, what do you need? You need maths. You need mathematics and reasoning. Basic maths. Whenever I talk about maths, I talk about basic maths. 3-4 chapters I've been talking about profit and loss, ratio and proportion, percentage, and then try to solve. Don't you love solving reasoning? People love, even at this age, I love, solving reasoning problems. Always remember, there is always a tomorrow. There is always light at the end of the tunnel, provided you are able to see that and you are able to grab that opportunity. हमेशा याद रखना, हमेशा सुबह है, सुरंग के दूसरी तरफ रोशनी है, मगर उस रोशनी को देखना होगा आपको और उसे ग्रैब करना होगा, झपट्टा मारना होगा, उसको अवेल करना होगा। नहीं तो जिंदगी जैसी चलती रही है आपकी, वैसी ही चलती रहेगी। मैं क्या, दुनिया का कोई भी टीचर कुछ नहीं कर पाएगा। यही सत्य है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात, कम्युनिकेशन की बात हो रही होगी, मुझे नहीं लगता कि वहां कोई इंस्ट्रक्टर मैथ्स की बात करता होगा कि ये 3-4 चैप्टर पढ़ लो, तुम्हारे काम आएंगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन शार्प होगा। रीजनिंग के क्वेश्चंस बनाओ, ये बहुत जरूरी है। तभी पर्सनालिटी में वेट होगा और तभी लोग आपको ले पाएंगे। The other day, I was talking to a person who has every information about the coaching institute, which is the brand leader in this segment. And that institute has a branch here in our town also, in our city also, right? Now, that person who is an insider of that coaching institute, when I specifically asked him how many placements for cabin crew member you have secured over the last 6 months, his answer was hardly any. And he defended it by saying, sir, हर कोई cabin crew बन नहीं सकता and all. यहाँ तो हम हर किसी को cabin crew बनाना चाहते हैं. For him, the placement was shopping mall में,
किसी बड़े शोरूम में एंड ऑल, वहाँ हमारे बच्चे हैं, यहाँ हैं। सर किसी को 18,000 20,000 रुपये पटना शहर में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। So he was trying to defend that, and he was trying to project, project that getting into the cabin crew or being a cabin crew is not at all easy. Even we say that it's not easy, but we at the same time know that it is not impossible. It is very much achievable, and people, Pratiksha, you're waiting for your result from Akasa. So yes, and in the past, we have placed, more than 100 students from this institute only over the last 3 years, because we believe in training. And it is precisely because of that, I'm asking you to invest in your personality. अच्छे व्यक्तित्व के जो 3-4 पहलू हैं, उनमें एक जिसे हम अंक गणित कहते हैं या संख्यात्मक योग्यता कहते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं। आपने इस बात पे कभी गौर किया है, जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या बाकी किसी भी जॉब के लिए, उनमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथ्स होता है जिसमें मेनली न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, राइट। रीजनिंग होती है, जीके एंड जीए, राइट। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, राइट। कहीं जीके कम होता है, जीए ज्यादा होता है, कहीं कुछ इस तरीके से होता है, बट जीके किसी न किसी फॉर्म में होता ही होता है। एंड फोर्थ इज लैंग्वेज, राइट। एंड दैट इज मेनली लैंग्वेज। हमारे देश में लैंग्वेज का मतलब हो गया है इंग्लिश। वो आपको पसंद हो नहीं पसंद हो, अब अंग्रेज जो देकर गए हैं तो उसको करना है, सब कुछ तो हमारा अंग्रेजी में ही होता है। और हाँ, हम साथ में आपको ये बताते ही रहते हैं हमेशा कि आपकी हिंदी भी बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, बिकॉज इन इंडिया यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट इफ यू आर नॉट फ्लुएंट इन हिंदी। And hailing from Bihar, it is always going to be a challenge for you to speak in Hari Boli Hindi. So pay attention to these 3-4 things. And once again, building personality is not an overnight phenomenon. It takes time. It takes time. It is not based on formula. It will take time. So don't get desperate. आतुर नहीं हो कभी भी। धैर्य आपको नहीं खोना है, क्योंकि व्यक्तित्व का जो निर्माण है उसमें वक्त लगता है, उसमें समय लगता है। बोलना, सुनना, अच्छे से कपड़े पहनना, तैयार होना, प्रेजेंटेशन देना, ये सब चीजें रातों रात नहीं आती। तो इसलिए धीरज नहीं खोना है, लेकिन काम करेंगे तभी तो, है ना।